Hello, Hello, guys. guys. Thank you for joining us on a Saturday. And I know this is a weekend, and you might all be thinking that because, yeah, weekend mode, right? But still, thank you for joining us. We have like a very limited time in which we have to complete a syllabus, and we really appreciate you being here on a weekend. And this is our session two of the Android Bootcamp. So, we have our Android lead Saransh here with us, so who will be proceeding with the session today. And if there are any questions, anything, you can type it in the question and answers tab, or you can just type it in the normal chat box. So that'll be very helpful for us. So we'll start, and I really hope every one of you has downloaded the Android Studio, because it's really important for us to have that Android Studio with you. If you haven't downloaded it, there is still time. You can download it. I'll hand it over to Saransh. Saransh. सो हेलो एवरीवन। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजने वाली हूँ गिटहब का। ठीक है। उसको सब लोग पहले क्लोन कर ले रहा हूँ क्योंकि उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक वो होगा हम लोग तब तक आगे की चीज़ें प्रोसीड करेंगे। सो जो मैंने व्हाट्सएप पे जो लिंक डाली है गिटहब की, वहाँ जाके आप सभी कोड में जाकर मैं एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ, विजिबल है। ओके। सो गिटहब में आप सब यहाँ जब ओपन करोगे इसको तो एक रिपोजिटरी शो करेगी। यहाँ से कोड में जाना है, इसे कॉपी करना है। ठीक है। देन एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर जो अगर ऑलरेडी ओपन है तो वहाँ से आप न्यू में प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल और यहाँ वो यूआरएल डाल दीजिएगा। एंड अगर एक न्यू सेशन आप ओपन करोगे तो एक सेम जो पैनल आता है वहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। गिटहब एंड गिटहब एंटरप्राइज वाला एक ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे सिर्फ यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। देन क्लोन। तो एक प्रोजेक्ट जो होगा एक थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है। तो ये आप कर लो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो फिर से हम रिपीट कर देंगे, अगर हाँ। कोई ये फॉलो अलोंग नहीं कर पाया तो बता देना। हम्म। ठीक है। सो आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो कॉटलिन लैंग्वेज होती है उसकी कुछ बेसिक चीज़ें। फॉर एग्जांपल वो क्या है एंड उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए या फिर कंट्रोल फ्लो हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक दिखाता हूँ। कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे कि ये एक जावा बेस्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा जेटब्रेन्स के थ्रू बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ गूगल, ताकि कॉटलिन का यूज़ करके हम लोग एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस मेनली बिल्ड कर सकें। और भी यूज़ होते हैं इसके, बट मेजरली ये यूज़ होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ही लिए। कुछ इसकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में उतनी नहीं होती है, वो जैसे कि इसमें सेमीकोलंस की ज़रूरत नहीं होती एंड करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा फिर इसमें लाइक हम लोग वेरिएबल एंड वेर यूज़ करते हैं। मैं अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। देन एक इसकी जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ होती है वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहाँ पे वैसे कंडीशंस पे क्रैश हो जाती हैं। इसमें हम लोग को चेक लगा सकते हैं। ओके। सो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ चीज़ें इसकी बेसिक्स। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों की एक होती है क्लास फाइल्स। ठीक है। अब बात आता है क्लास फाइल क्या होता है। सो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप चीज़ों को हम लोग रियल लाइफ में कैसे डिवाइड करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हीकल एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे टाइप ऑफ व्हीकल्स, जैसे कि बोल सकते हो ट्रक हो गया, या नॉर्मल कार हो गया, या बाइक हो गया। ठीक है। उसी तरह आपको अगर और अंदर उसमें जाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कार को क्लास बना दोगे, तो उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उसके टाइप्स, जैसे कि एसयूवी हो जाती हैं, या फिर हैचबैक्स हो जाती हैं, उस तरह से। और अगर उसमें अंदर जाना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप होंडा को एक क्लास बना दो, तो उसके अंदर की चीजें आ जाएंगी, होंडा सिविक हो जाएगी या होंडा अमेज हो जाएगी, इस तरह से। तो क्लास और इसमें यही चीज ऑब्जेक्ट में यही होता है कि एक मेन क्लास होती है, देन उसकी ऑब्जेक्ट्स हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, जो कि उसकी एक तरह से ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है। एंड्रॉयड ऐप के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो क्लास फाइल्स होंगी, वो हमारी वो फाइल्स होती हैं जिसमें हम लोग लॉजिक्स लिखते हैं अपनी पूरी चीज ऐप की, कि हमारे ऐप में क्या होना है और कैसे होना है। ठीक है। जो हमारी और कोटलिन में जो क्लास फाइल्स होती हैं वो डॉट केटी के फॉर्म में रहेंगी। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है। मेन एक्टिविटी डॉट केटी, ये उस क्लास फाइल का नाम था, और ये उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट केटी, मतलब डॉट कोटलिन। सेम जावा में डॉट जावा होता है। ठीक है। सी में डॉट सी रहता है। अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से उनके अलग अलग एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इतने तक में कि एक क्लास फाइल क्या होता है? हाँ, अगर डाउट है तो अनम्यूट कर लो। आई गेस डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है फिर। ओके, सो ये हो गया हम लोग का क्लास फाइल। ठीक है। उसके अलावा इसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शंस पे। ठीक है। फंक्शन से पहले चलो मैं आपको कुछ प्लस माइनस की चीजें दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। कॉटलिन में फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक चीज होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंटेनर्स की तरह वो होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो फिर आप लाइक वहाँ जाओगे और कुछ भी चीज़ें खरीदोगे, तो उसके लिए आपको एक कार्ट बोल सकते हैं कार्ट लगेगा, या फिर एक पॉलीथीन बैग लग सकती है, या हैंड बैग लग सकती है, टोट बैग। ठीक है। तो इस तरह से जो बैग्स होती हैं सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ल्ड में हम लोग उनको वेरिएबल्स की तरह बोलते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल्स लाइक कॉटलिन में दो टाइप की होती हैं, एक होता है वेल, ठीक है, और एक होता है वेर। ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो वैल होती है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स हो जाएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो फिर मैं बना ही लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेर आई इज इक्वल टू 1, वेर जे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाई है जिसकी वैल्यू 1 है, एक वेरिएबल है जे जिसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे अब वेरिएबल सी क्या है, वेरिएबल सी है आई और जे का सम। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर स्ट्रिंग के साथ भी ये चीजें कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस तरह से जो चीजें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसे हम लोग बोल देते हैं स्ट्रिंग। और अगर ये यहाँ पे सिंगल हो, ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर, हो गया सिंपल सा। ठीक है। इनको जो हम लोग मिक्सअप कर देते हैं तब एक बन जाता है स्ट्रिंग। उसी तरह से एक होता है एरे।
Saransh, you can like, can you go bilingual? We have some people जिनको हिंदी नहीं आती, so if we can go in English, तो सही हो जाएगा. हाँ, so if you can see, these are called variables. Here I, where I equal to 1, it means I will be holding a numerical value which is equals to 1. Same j. And if we write c is equal to I plus j, that will mean c will hold I, the sum of I and j. Okay. Same with string. So these are called strings. If we write something between dual quotes, then it will like show what it will be like, for example, set of characters here, which, and we can also use some other functions in it. For example, s dot. You can see these are some built-in function which are linked with string type of variables. Also, if we write I dot, then these are some functions which are related with uh, data type integers. Okay. So these are called variable and how we can define it. So do you have any question? इसको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर अभी तक इतने में कि वेरिएबल क्या था एंड वो कैसे डिफाइन हुआ है? हम्म. हाँ. Shiraja has a question. Yeah, go ahead. Yeah, I'm just sorry for being a bit late. Could you just summarize what all you have just explained in a nutshell? Okay, wait. So I was explaining about how we define variable or what a variable is. So in short, variable is just like a container in which you store item. You can either store it in a, I can say, temporary way or a permanent way. For example, these words, these are mutable. For example, I equals to 3. So as you can see, I can rewrite the value in I because it's a type of var. But if I define a variable val k 4, it won't be able to rewrite this value because it's a type of value. It will be fixed once if it's defined, and where we can like change it further. So that's all that is important in variable part. Apart from that, please download this repository. I have shared the link in your Android Studio because I will be sharing some a small concept of, you can say, calculator app here later on. So the steps have been pinned in the chat. You can just use that to follow along and clone the app as we did, as we explained in the first of the for starting of the session. So you can use the instructions that are pinned. Should I go on further? Yeah, sure. If anyone has any questions, they can raise their hands. Okay, so that was what the variables are. Now we'll look into what functions are called. So functions are mainly called, or you can say what the functions. These are like a set of instructions. For example, if I write some type of instruction like what should be done in a packaged form. For example, if you like go to your college and if you have some work, for example, I have to do home complete my work at 1, I'll have to reach deja brew or something like that. So these are type set of instruction which you have to follow, but instead of like doing them or calling them one by one, you can just wrap them in a single space. For example, in function we can do set of operations and define them here only. For example, it's a function called let's do.
So for example, if we write so what this function will do, it will do all this thing in a direct form. For example, if I call it somewhere, then it will do everything inside it. For example, we can do other type of instruction and set them here only. For example, there's a thing called checkers or control statement. For example, if okay, let me tell you what this if is. So this if is called or if else statement. It is known as the check statement or control statement. You can control or you can like set some conditions here. For example, if I is greater than 10, so you can do wait. So if variable if I is greater than equal to 10, okay, or wait, I is not defined. So if I is greater than equal to 10, it will do test 1, else test 2. What this means is if there's a inside if we write a condition, okay, and if that condition is true, then it will perform set of things which are inside these semicolons for curly braces, or else they will perform this. You can also implement one more if here if you want, and so on. Like it will, it's called a nested if. Okay. We will be like implementing this in a practical way soon. Okay. So do you have any question in if part and function part? Like what a function is? Like किसी को कोई क्वेश्चन है फंक्शन में और इफ में क्या था? No question. तो मैं अब एक बेसिक से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. I'll show you an example of what we can do. So here is a type of edit box. These are those section in Android app where you enter any data or any type of information. For example, when you're like chatting with someone, that bottom section in your WhatsApp where you enter a message or used to enter a message, that is a type of edit text. Okay, so as you can see here are two edit text and one text view. Okay, so let me give you a brief about what these text view and edit text are. So text views are mainly those type of view which display a basic text. Okay, that's it. So you can and there are different properties to it. For example, it's width control or height control. Okay, and how we are gonna set it. I'm gonna explain everything.
And edit text is it is used for receiving the data or entering or where a user can enter the data. Okay, there's one more thing. Also, this is the same application that we cloned, right? वही वाला है Yeah, ना yeah, जो it's the same. It's the same. all I right. will be giving a small, as you can say, experiment which you can try directly in your system. So here I'm calling an fun view, image view. So what this image view is a type of view which is used for displaying image formats. Image view one. Okay. So by default, when you call a whenever you call any type of view inside any layout, it by default it will be like here only. Okay. So you can use two type of methods to like set them properly. One is just use drag and drop, or else you can use code method. So here I'm setting the width of that image view 50 dps. Okay. In Android, we use DP as measurements. There are other measurements also, for example, SP and PX. But if you are dealing with any type of views apart from fonts, then always prefer using DP because it will be much reliable for your Android devices as compared to SP. Also, it's the industrial, as I can say, regulations, they prefer using DPs. So I have given width 50. So it's looking like this because the height is wrap content. Okay. What content means? So wrap, if you add wrap content, then height will be according to the content inside it. For example, if I add a picture inside it which is around 50 by 50, okay, so it will adjust its size according to its width or according to the content inside this. Okay, for example, I'm defining it 50 only here. Okay, so it will look like this. Okay, so it's a image view which is having width of 50 dp and height of 50 dp, and its ID is image view 1. Make sure you always add a ID to any type of views inside your XML files or any type of design file. Okay. So anyone having doubt till now in image view part? Okay. So the reason why it's here is because it is not attached to our screen properly right now. Okay, so you can use two methods. For example, you can just drag and drop. Okay, and you can use constraints. So these are called constraint balls. Okay, you can use this to set the views inside a layout. As you can see, it's written here constraint layout widget dot constraint layout. Okay, so the parent most item is a type of constraint layout. Okay, and this is our screen. So the parent most item is a type of constraint layout where we set item with their constraint. For example, it will be like related with another item. For example, this. So one thing is added here, start to start of parent. Okay, so here the parent is this constraint layout. Okay, and end to end of parent, as the name suggests, it's the just starting point, start to start of parent. Okay, or you can use start to start of hello world. So hello world is having a ID, this, so this text view is called hello world. Okay, so that's how I added this constraint. And
start top to top of parent. Okay, so now it is there only. And if I edit bottom to start, bottom to top of hello world. Okay, so that's how we can like set if you use this draggable method. But the problem is due to this method you have like a issue of not having a proper design, because you won't be able to have a perfect look if you use this method. So always prefer to write it using code programming way. For example, like here we don't have enough issue. Okay, so it's a type of image view. Okay, wait. Hmm. Now we'll get into how we can like use variable in this basic application. So I will be showing you something. For example, in main activity, inside this function f, function start, sorry, I will be calling that design using this binding. Okay. So what this binding is, through binding, we can like attach that design file to this class file. Okay. So private var binding. Okay. Colons means it is like inheriting that class file. Okay. If I open this, it will take me to this design file. Okay. Then through this binding, I will be calling dot value one. Okay. So I have defined three type of variables here. Okay. Uh, private is called access modifiers. Okay. If you write private in front of anything, it will be saved or protected to that class file only. So if I write private where value one, which is type of string and its default value, or I can say by default it's null. Null means it will have nothing. Okay, so here are three type of variables. Okay, so in this function what I'm doing is I will be like saving the value of that edit text where user like take inputs from. For example, this edit text. Okay, wait, let me add a hint. Okay, so here is, so value one equal to binding dot value one dot text to string. What it means is through binding we are calling that design or I can say view. Its id is value one. So here it's value one dot text. Dot text is a type of I can say attributes function. Okay, and
every type of view will have a different type of its attributes. Uh, for example, if I click here, it's a type of edit text. Inside edit text, these are type of properties you can change or use. Okay. So one of the property is dot text. So through text, you can fetch the details of that text value inside that edit text. And to a string means after taking that text, I will be converting it to a string. Okay. Same with value 2. So in short, value 2 and value 1 will hold any type of user input from these. Hmm. So value 1 and value 2 will hold or save any type of value from these boxes. Okay. And I am calling this function in on create. On create is the function or is the I will be like explaining this in next session what this on create is. So what on in if you write anything inside the on create, it will be called directly when that application is loaded. Okay, it's not that my statement is not clear actually here because it depend on the life cycle that will be covered later. But for now, just keep that in mind that if you write anything in onCreate, that will be done or called directly when that application is opened or start. So when that application is started, a function will be called start. Okay. So any value inside that will be saved in it. No, we won't be doing that. We'll be doing something else. Wait. Okay, so what will happen here when the user will click on answer, set on click listener means when a user clicks on any type of view, okay, then that click will be, or I can say that click will be hit will get hit here. If user will click on this view, then if, anything written inside this area or section will get run. For example, when you'll be clicking on answer, that start function will get called. Okay. So and inside the start function, I'm having this expressions here, saving the value from that you part, or and also setting that value 1 to that string. If I run this,
So if I write mm, 22 here and 44 here, and if I click on answer, it will show 22. Okay. So what happened actually here is that value 1, anything written inside it, it will get saved, it got saved into this, and value 2, and I only set it the value 1 in answer section. Okay, you can change it to 2244. It will work something like this. You can also plus them. Wait, if I So for having for like adding them, you'll have to convert that data into or variable into integer format. Okay, or it will like give an issue of uh, typecasting, because the type will be different. So if I write to int here, so that value will be converted to string, then to int. Okay, and if both the values are integer, then we can plus them. So okay. So what I've written here, I'm saving the user input and converting it to a string, then to integer, means in a number in value 1, same with value 2, and value 3 will have the sum of these values. Okay, and that answer will have that and that this text view, it will have the value of that value from that value 3 variable. Okay, so if I write 2 and 4 and will click on answer, it will give 6. So it is the sum of 2 and 4. If I write 20 here, it will give 24. Okay, wait. Okay, so it's giving me 24. Okay, so that's how you can like use a function to like make your application do any sort of things. Okay, so if possible, like can you like perform this right now? I've like shared that project file in the WhatsApp. Just clone it and make these changes. Okay, you can use different type of I can say logic here. For example, you can take age or something like that.
Like for example, you can have make a condition where if sum is greater than 24, give a different say something else. I will show you another example, but just perform that much in your device. And any question till now? Like कुछ समझ नहीं आया हो यहाँ पर अभी इतने हिस्से में, कि ये फंक्शन लाइक कैसे हमने बनाया एंड क्यों बनाया एंड ये कैसे हुआ था? किसी को यहाँ तक डाउट है? वो वैल्यू 3 वाला पार्ट फिर से समझा दे भाई। वैल्यू थ्री वाला, ओके। सो वैल्यू थ्री में क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने वैल्यू थ्री इक्वल टू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू लिख दिया है। ठीक है, वैल्यू वन और वैल्यू टू क्या है? जो ये वैल्यू वन है ना, ये व्यू यानी कि जो एडिट टेक्स्ट है ना, जिससे हम लोग यूजर से डेटा लेते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं सेव कर रहा हूँ वैल्यू वन के अंदर। ठीक है, इस लाइन में क्या हो रहा है, बाइंडिंग जो होती है उससे हम लोग जो डिज़ाइन होती है ना, उसको इधर लॉजिक में पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे हम लोग क्या चीज़ को पकड़ना है, एक पर्टिकुलर पार्ट को, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देन उसके बाद डॉट टेक्स्ट से इस जो ये डिज़ाइन है ना, इसके अंदर की जो टेक्स्ट वैल्यू होगी ना, वो हमको मिलेगी और उस टेक्स्ट वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग उसको आके प्लस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा जैसे नाम है, नाम के अगर शुरू के तीन वर्ड्स ले लो और उनको फिर प्लस कर दो किसी नंबर के साथ, ठीक है, तो वो शुरू के तीन वर्ड्स और वो नंबर प्लस हो जाएंगे, तो वो एक स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ वैल्यू थ्री में जो वैल्यू वन के अंदर जो भी डेटा था या जो भी नंबर रहेगा और वैल्यू टू में जो डेटा रहेगा वो प्लस हो जाएगा। उसके साथ ही प्लस होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये आंसर वाला है लास्ट में, जो ये वाला टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू थ्री की जो भी डेटा होगा उसको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू मीन्स जो भी यहाँ पे है उसके टेक्स्ट में वो चला जाएगा। अभी आया समझ, कि मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल से बताऊं? एक और एग्जांपल बता दे। अच्छा ठीक है फिर। जैसे कि हम लोग एक एक व्यू और लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आंसर करके था ना, एक टेक्स्ट व्यू में और ऐड कर देता हूँ। इसको आईडी दे देते हैं। हम्म, आंसर टू नाम का। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं इसके नीचे। आंसर ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब वर्टिकली ये उसके नीचे है, हॉरिजॉन्टली इसको अब सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट टू स्टार्ट आउट, थोड़ा मैं अलग करता हूँ, आंसर एंड टू एंड ऑफ आंसर। तो इससे क्या होगा, इसका स्टार्ट और इसका जो एंड है ना, इस दोनों इसी से है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसके हमेशा सेंटर पे फिट रहेगा। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट टू। ओके, एक मैं बटन भी लगा देता हूँ। अच्छा, ऊपर तो था।
ओके, सो इस बार थोड़ा एक अलग लॉजिक लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर इमेज इमेज व्यू वन को क्लिक किए तो स्टार्ट कॉल हुआ। ओके, सो अभी मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, ठीक है। तो देखिए, वैल्यू वन में, एक मिनट, क्या होगा, जो भी वैल्यू वन में हम लोग अभी सेव करा देंगे यूजर का डेटा। एक मिनट यार। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू वन में यूजर का डेटा सेव हो जाएगा, जो भी हम लोग इसमें इनपुट लेंगे, ठीक है। वैल्यू टू में भी सेकंड वाले डिजाइन का डेटा, सेकंड वाले से डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू थ्री करके एक वेरिएबल है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है, यानी कि ये नंबर वाली वैल्यू सेव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू वन और वैल्यू टू का सम है। Saranj, can you explain in English? We have people. Okay, okay. So value one will be saving user input in value one in an integer format, and same with value two. And in value three is a type of integer value. Okay, it will be saving the sum of value one and value two. Okay, is it clear till now? This part? It's just like you're buying a. For example, if you go to any fruit shop, you'll buy one apple and one banana. Okay. And value three is a type of special bag in which you can only keep fruits. Okay. Then if you go to a medical store, you'll be having a separate bag for that, right? You won't be mixing that with vegetables. So you can like relate that with it. Value 3 is a type of integer variable which will have integer type of input or type of data, because you can't like add a number to a character till now only. Okay, so till now is it clear, like why I've written value 3 here and what it's doing? Yes, they're saying yes. Okay, so I have made a small change here also. So if value 1 is greater than 2, okay, if the value of if whatever the value of value 1 will be, if it's greater than 2, it will call this function let's do 1, okay. And or else if it's not greater than 2, it will call let's do 2 function, okay. And it will have the value of, and in answer, wait, let me show you an example. So I am writing 3 in value 1
and 4 on value 1, and I'm clicking this icon. Okay, so it's giving me 7 because here the value of this is greater than 1, so it's giving me the 7 here. Okay, to call होगा इसमें लोग कर लेते हैं to wait. So and 4. So you can see there's a difference here. So when I write or when I say give a input of 2 here and 4 here, okay, it gave me answer here. Okay, in the second section, in the second answer. Okay, in answer 2, because I've written a condition here. If the value of 1, if value 1 is greater than 2, do this function, and in this function I have written answer dot text equal to value 3, means whatever the sum of both of them, it will get saved into answer 1. Okay, or if it's less than 2, means I write 3 here, it will give 6. So when the value 1 is greater than 2, okay, it will do this. Like in it will save the value of 3 in of their sum part. Okay. You can do this in, you can also do one thing to make a better design. So what I did here, wait, look. So if I write 2 here, okay, and 3 here, okay, value 1 will get 2, and value 2 will get 3. Okay, and value 3 will have their sum. Okay, and what their condition is here, if the value 1 is greater than 2, let's do 1. In 1, we will have like the answer view or the text view will get the value of value 3. Okay, so okay, it's greater than 2 condition here. Okay, so that condition got false, and that design did not receive the value, and answer got saved into this, means that this function got called actually. Okay, if I write 1 here, it's 4. uh, what we can do is much better than 5. Now it is much better. 3 and 1. Okay, so if their sum is greater than 5, means value 3 was having the sum value of 1 and 2. If value 3 is greater than 5, this function will get called, and or else this function will get called. Let's write, okay, not now. So function 1 didn't get called. Oh, sorry. Yeah, function 1 didn't got called. The our program went into the else case because this was false.
the value 3 4 is not greater than 5. Okay, so like, did you guys get it what I did here till now? How I made this change and why it's working like this? Yes, they're saying yes. So Hmm. if the value 1 was greater than 5, the value 3 was greater than 5, then Hmm. it would be different. Yeah. So, for example, if we wrote 6 and 1, the sum would be 7. Then we would get 4 upwards and not now downwards, right? Hmm. Right. 7. Okay, okay. Okay. You can like play with this also. For example, in India, the age for voting is 18. So, for example, if greater than equals to 18, okay. So, if value 3 is greater than equal to 18, we will call this function, and in this function, let's write something else. Mm, wait, let's give answer 1 is equal to value 3. Okay, so what I've written here, if the sum of this number is greater than equal to 18, okay, then you are eligible to vote. Or let's just remove it. Wait, let's make something else. Mm, for example, if we take the age in 16, okay, let's make a different age. So it's a program where you can like enter your age and get to know if you are eligible to vote or not. So here you can like enter your age. For example, I'm 23. I enter 23. Clicked on this box. Okay, if I write 23 here, it will give me you are eligible to vote, because if value 1 is greater than 18, it will call this function according to which it's written here. Show represent the value of 1 to this text view and show this text in this. You are eligible to vote. Or if it's false, for example, I write 15. Okay, it will give
You are not eligible to vote. Okay, because it went to into this part in this function. Okay, so that's how you can use if else statement to make any type of checks in your program. Okay, and also like okay, so in your I guess first semester you must have those programs where you have to find the value of for example print top 50 prime numbers or something like that. You can try those programs in this. So there are different type of programs you can try. For example, this was a basic example of how you can do like check the age for voting. You can also try something with the leap year one or the vowel one if this word is having a vowel or not. Okay, so you can use or make something like this. So if possible, just try and run this in your device and make some this type of changes in logic or something like that. Or you can just do some design changes if you want. Like you can show or change the color of this box. Let me show you how you can. I'll show it later. So till now, anyone having any doubt like how this worked here? Like how value one is having that value and why it did that? No. So like how many of you did it right now in your device? like किसी ने अभी ट्राई किया अभी तक इसे? ओके, सो एक बार दिखाओगे सबको जो किया था अभी ट्राई? यू कैन रिप्रेजेंट हियर. हाँ विशेष, उसको परमिशन दे देना अगर वो रिप्रेजेंट करना चाहे तो. शाश्वत सौर्य राइट. ओके. नहीं, परमिशन दिया हुआ है हाँ हाँ. फोन से ओके. ज्वाइन करना है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. ओके कोई बात नहीं. तो सरांश, व्हाट वी कैन डू इज, हम्म, जो आपने अभी चेंजेस किए हैं, वी हम्म. कैन गेट दिस टू द रिपोजिटरी जो आपने बना रखा है. हाँ मैं ठीक है, उसमें कुछ कर देता हूँ. ठीक है. एंड देन व्हेन दे विल क्लोन, दे कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट व्हाट हैव यू डन. तो उस पे वो चेंजेस भी कर सकते हैं. हम्म. एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल आप लोग इसी में चेंजेस करके जस्ट मेक सम न्यू वेरिएंट ऑफ व्हाट आई डिड देयर. ओके, you can use those program which you got as your homework in your previous C or Java classes and implement here only. Okay, as for now you know how to make a print statement like you did in your C, so you can implement them here. Okay, wait, वेट. हाँ मैंने दूसरी रिपोजिटरी को डाली गई. Okay. तो मैंने जो चेंजेस करी है ना वो सबको आई गेस गिटहब में रिफ्लेक्ट कर दी होंगी. ठीक है, तो वहां से अब सब एक नया कोड बेस जो मैंने बनाया था उसे क्लोन कर लेना एंड जस्ट प्ले विथ इट. ओके, change the design or change anything you want in that. Just play with it and you must be having you or I'd say you must get any if issue regarding SDK or something like that. If you get any type of issue, just let me know. I'll try to resolve it. And please do uh,
try this in your device, okay? Because if you don't practice it, you won't be able to get into what I'll be like doing in next sessions, okay? Because in next session, I most probably I'll be making some design. Started making that edit text or text views, okay, or that image view, okay, and you can explore on your own some new things in those type. For example, how you can like change the font or the style of those text view or the edit text designs, okay. So yeah, that's it for now. And please do clone that repository and work on it and make the changes in your devices. And if you make any type of design or something like that, just post it in the WhatsApp group so others can also see like what you did. Okay. So you can like also make some design changes in that particular design. You can like change the color of the background. Okay, so make some variants like that and share in your in the group. Okay, so that's it for now. Amazing, sounds good. All right, then, guys. Thank you so much for joining us today. When we meet again offline on either of Monday, Tuesday, and Wednesday, we'll be doing a lot more things. And obviously, when the session will be offline, I hope you guys will interact with us and understand more about what's happening. So, I hope when we meet on Monday, Android Studio will be installed in every laptop of yours, so that we can really follow along and see what's happening. So if there's any issue that you're facing on the spot, we'll be there to help you out. So thank you so much, guys. You can start to leave now. The recording of this session will also be uploaded, so you can also